So in today's video we will do the objectives of Chapter 7 Food of DAV Public School. So we have read the Chapter 7 Food. I hope you have understood that chapter. Tell me that you have understood or not. Okay, so let's start now. First we will do the question number A, fill in the blanks. So first question is, carbohydrates and fats are the nutrients which provide energy to our body. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज एनर्जी. सो यू फिल देयर एनर्जी. ओके, सो राइट आंसर इज एनर्जी. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is, food stuff containing dash are called body building food. यानी कि कौन सा फूड स्टफ्स कंटेन करता है जिसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. सो इन द ब्लैंक स्पेस, इन द सेकेंड क्वेश्चन ब्लैंक स्पेस विल फिल देयर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स वो फूड स्टफ है जिसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. So third question is, dash and dash are sources of vitamin C. यानी कि कौन से टू सोर्सेज इसमें हमें बताने हैं विटामिन सी के. तो सारे खट्टे चीज जो होते हैं विटामिन सी होते हैं. तो we fill here lemon and orange. I am writing in the board, you see there also lemon and orange. Okay, now let's move to question number 4. So question number 4 is, we can get dash from iodized table salt. हमें आयोडाइज टेबल सॉल्ट से क्या मिलता है. सो इन द ब्लैंक स्पेस विल फिल देयर आयोडीन. इन द ब्लैंक स्पेस इन द फोर्थ क्वेश्चन विल राइट देयर आयोडीन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is, the roughage in our diet helps the body to get rid of dash food. यानी कि जो रफेज होता है हमारे डाइट में वो हमारे बॉडी को हेल्प करता है रीड लेने में कौन से फूड का. सो इन द ब्लैंक स्पेस विल फिल द अनडाइजेस्टेड. इन द फिफ्थ ब्लैंक स्पेस विल फिल द अनडाइजेस्टेड. सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डू द true and false. So here we have to write the true and false for the following statements. Okay, so first question is, all nutrients are important for our body. क्या सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन विल राइट देयर ट्रू. सो वी विल फिल देयर ट्रू. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज, आवर फूड शुड इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन. क्या हमारे फूड को वन सोर्स ऑफ मतलब प्रोटीन के वन सोर्स से ज़्यादा चाहिए. So in the second number we will fill their true. In the second number we will fill their true. Now let's move to our third question. So our third question is, our body needs vitamin C for healthy bones and teeth. No, it's wrong. Our body needs vitamin C for the strong healthy gums, proper functioning of blood vessels and repairing the worn out tissues. So third question is false. Okay, so the third question is false. Now let's move to our fourth question. So our fourth question is that a balanced diet need not contain all nutrients. क्या बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होने चाहिए. इट्स फॉल्स. बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. सो इन द फोर्थ प्लेस वी विल फिल देयर फॉल्स. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेरी एक्टिव. यानी कि ओल्ड पीपल जो कि इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, शुड ईट मोर ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. उन्हें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. सो द फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. वाई? बिकॉज जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. क्योंकि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो एनर्जी देता है, उन्हें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. So now let's start
Question number C, tick the correct option. So first question is calcium, iron and phosphorus are examples of. यानी कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस किसके एग्जाम्पल? सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज मिनरल्स, बी इज विटामिन, सी इज प्रोटीन्स एंड डी इज कार्बोहाइड्रेट्स. So tick on A, minerals. You tick on A, minerals. I am writing on board continuously. You can see on the board also. Okay. So now let's do the question number 2. So question number 2 is a person doing. No, sorry. Question number 2 is protective foods are needed by our body for. कि protective food हम लोग की body के लिए किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? Our options are A, energy, B, warmth, C, health, D, growth. So tick on option number C, health. Question number 2 answer option number C, tick on health. Okay. So now let's move to question number 3. Question number 3 is a person doing a lot of physical work needs more of. कि जो पर्सन जो कि बहुत सा फिजिकल वर्क करता है उसको कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए? Our options are option number A, vitamins, B, minerals, C, proteins and D, carbohydrates. So tick on D, carbohydrates. So tick on D, carbohydrates of question number 3. Okay. So now let's move to question number 4. So question number 4 is sugar contains mainly. Sugar इनमें से कौन सा nutrients contain करता है? So your options are A, carbohydrates, B, vitamins, C, minerals and D, fats. So tick on option number A, carbohydrates. So tick on option number A, carbohydrates of question number 4. So now let's move to question number 5. Our last question. Okay. So question number 5 is the vitamin that helps us to have good eyesight is vitamin. अब कौन सा विटामिन हमें हेल्प करता है गुड आईसाइट रखने में? सो योर ऑप्शंस आर ए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी. So our right tick on the option A. Okay. So tick on the option A of 5 numbers. So thanks for watching. Like and subscribe.